श्रीमन्नारायणीयं दशकं 45 अयि सफलमुरारे पाणिजानुप्रचारैः किमपि भवनभागान् भूषयन्तौ भवन्तौ चलितचरणकुञ्जौ मञ्जीरसिञ्झा श्रवणकुदुकबाजौ चेरदुश्चारुवेगात् मृदु मृदु विहसन्धौ उन्मिषद्दन्तवन्तौ वदनपतितकेशौ दृश्यपादाब्जदेशौ भुजगलितकरान्त व्यालघत्कङ्कणाङ्गौ मतिमहरतमुच्चैर्पश्यतां विश्वनृणाम् अनुसरति जनौगे कौतुक व्याकुलाक्षे किमपि कृतनिदानं व्याहसन्तौ ध्रवन्तौ वलितवदनपद्मं पृष्ठतो दत्तदृष्टी किमिव न विदधाते कौतुकं वासुदेव धृतगतिषु पतन्ता उत्थितौ लिप्तपङ्कौ दिवि मुनिभिरपङ्कै सस्मितं वन्द्यमानौ धृतमतजननीभ्यां सानुकम्पं गृहीतौ मुहुरभिपरिरब्धौ द्राग्युवां चुम्बितौ च श्रुतकुशपरमङ्के धारयन्ती भवन्तं तरलमति यशोधा स्तन्यधा धन्यधन्या कपटपशुपमध्ये मुग्धहासाङ्कुरं ते दशनमुकुलहृद्यं वीक्ष्य वक्त्रं जहर्ष तदनुचरणचारी धारकै साकमारान् निलयततिषु केलन् बालचापल्यशाली भवनशुकबिडालान् वत्सकांश्चानुधावन् कथमपि कृतहासैर्गोपकैर्वारितो भू हलधरसहितस्त्वं यत्र यत्रोपयातो विवशपतितनेत्रास्तत्र तत्रैव गोप्यः विकलितगृहकृत्या विस्मृता पत्यभृत्या मुरहरमुहुरत्यन् ताकुला नित्यमासन् प्रतिनवनवनीतं गोपिका दत्तमिश्चन् कलपदमुपगायन् कोमलं क्वापि नृत्यन् सदय युवतिलोकैरर्पितं सर्पिरश्नन् क्वचन नव विभक्वं दुग्धमप्यापि बस्त्वं मम खलु बलिगेहे याचनं जातमास्ताम् इह पुनर्बलानाम् अग्रतो नैव कुर्वे इति विहितमतिः किं देवसन्ध्यज्ययाश्न्यां दतिघृतमहरस्त्वं चारुणा चोरनेन तव दधिघृतमोषे घोषयोषा जनानाम् अभजत हृदि रोषो नावकाशं न शोकः हृदयमभिमुषित्वा हर्षसिन्धौ न्यधास्त्वं समम शमय रोगान् वातगेहादिनाथ श्रीहरे नमः श्री पोन्नु गुरुवायूरप्पने शरणं श्री चोटानिक्करे भगवती अम्मये शरणं आनंद चिन्मयने शरणं नारायण अखिल गुरु भगवन्नमस्ते सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनं गोविंदा गोविंदा।